A very good morning to all dear parents and my dear students. Once again, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Class Junior KG, Subject English, Lecture number 4. Take out your book of I love cursive writing. कौन सी बुक निकालनी है आपको? I love cursive writing. Take out your cursive writing book and open the page number 7. कौन सा पेज नंबर है? 7. Today we will do the practice of letter writing together. Practice letter writing letter together. क्या करेंगे आज हम? प्रैक्टिस करेंगे लेटर्स को टुगेदर कैसे लिखा जाता है. पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था? आपने लेटर्स को साथ में लिखना सीखा था. तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. सो टेक आउट योर पेंसिल एंड होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस. आपको पेंसिल ऐसे होल्ड करनी है. नाउ यू हैव टू यूज़ पेंसिल इन द बुक. आपको बुक में पेंसिल ही यूज़ करनी है. नाउ व्हाट यू सी? लेटर ए. कौन सा लेटर दिख रहा है आपको? लेटर ए. ओके. A for apple. Speak with me. A for apple. Now put your pencil on the dot and draw a curve here and a small semicircle and join other A from here and again a semicircle and a curve. What is this? Letter A. A for apple. What is the spelling of apple? A P P L E. Apple. What is the spelling of apple? A P P L E. Apple. Now A for apple के बाद कौन सा लेटर आता है? B. B for ball. Write with me. Put your pencil on the dot and draw a slanting line and a curve. Join the second B from here and a curve and B. B for ball. What is the spelling of ball? B A L L. Ball. Now B for ball के बाद कौन सा लेटर आता है? C for cat. कौन सा लेटर आता है? C for cat. Now put your pencil on the dot and draw a curve and again a curve and join second C from here and this. What is this? Letter C. C for cat. C for cat. What is the spelling of cat? C A T. Cat. Now C for cat के बाद कौन सा लेटर आता है? D. D for duck. D for duck. Now put your pencil on the dot and draw a curve. Draw a curve and a small semicircle and a slanting line. next D आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे? यहाँ से. ओके. सो D for duck. D for duck. What is the spelling of duck? D U C K. duck. D for duck के बाद कौन सा लेटर आता है? E for elephant. E for elephant. So आपको क्या करना है? नेक्स्ट E कहाँ से ज्वाइन करना है? यहाँ से. From here you have to join next E. So E for elephant. What is the spelling of elephant? E L E P H A N T. Elephant. E for elephant के बाद कौन सा लेटर आता है? F for fish. कौन सा लेटर आता है? F for fish. Now put your pencil on the dot and draw a curve and again slanting line and a curve and stop here. What is this? Letter F. Now next F आपको यहाँ से join करना है and a slanting line and a curved line and stop here. What is this? Letter F. F for fish. F for fish. What is the spelling of fish? F I S H. Fish. F I S H.
fish. Now F for fish के बाद कौन सा लेटर आता है? G for grapes. कौन सा लेटर आता है? G for grapes. Now put your pencil on the dot and draw a curve and a circle and a slanting line and a curved line. This is G. Next G आपको कहाँ से join करना है? From here. Okay. Now draw a curved line and a slanting line and a curve again. Stop here. What is this? Letter G. G for grapes. What is the spelling of grapes? G-R-A-P-E-S. Grapes. G for grapes के बाद कौन सा लेटर आता है? H. H for house. H for house. Now put your pencil on the dot and draw a curved line and stop here and again a curved line and stop here. What is this? Letter H. H for house. Now next H आपको कहाँ से join करना है? From here and a slanting line and a curved line. What is this? Letter H. H for house. What is the spelling of house? H-O-U-S-E. House. Again speak with me. H-O-U-S-E. House. Okay. H for house के बाद कौन सा लेटर आता है? I for igloo. I for igloo. Now put your pencil on the dot and draw a curve, again a curve and a dot. What is this? Letter I. Next I आपको कहाँ से join करना है? From here. What is this? Letter I. I for igloo. What is the spelling of igloo? I-G-L-O-O. Igloo. I for igloo के बाद कौन सा लेटर आता है? J for joker. J for joker. Now this is J for joker. Next J for joker आपको कहाँ से join करना है? From here. कहाँ से? यहाँ से. So make J for joker. What is the spelling of joker? J-O-K-E-R. joker. J for joker के बाद कौन सा लेटर आता है? K for kite. K for kite. Now put your pencil on the dot, draw a slanting line, again a standing line and a small loop and a curve. Now next K आपको कहाँ से join करना है? From here, standing line and a small loop and a stop here. What is this? K. K for kite. What is the spelling of kite? K-I-T-E. Kite. Now K for kite के बाद कौन सा लेटर आता है? L for lion. कौन सा लेटर आता है? L for lion. What is the spelling of lion? L-I-O-N. Lion. Next L आपको कहाँ से join करना है? From here. Draw a slanting line, again a slanting line and this is L. L for lion. L for lion के बाद कौन सा लेटर आता है? M for monkey. कौन सा लेटर आता है? M for monkey. Now draw. Put your pencil on the dot and draw a curve. Next curve and again a curve. What is this? Letter M. M for monkey. Next M for monkey कहाँ से join करना है आपको? From here. Okay. Two curves are there between two blue lines. M for monkey. What is the spelling of monkey? M-O-N-K-E-Y. Monkey. M for monkey के बाद कौन सा लेटर आता है? N. N for nest. N for nest.
सो नेक्स्ट, एन फॉर नेक्स्ट आपको कहाँ से ज्वाइन करना है? यहाँ से, फ्रॉम हियर. सो ड्रॉ नेक्स्ट एन. व्हाट इज दिस? एन. एन फॉर नेस्ट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नेस्ट? एन ई एस टी, नेस्ट. नाउ एन फॉर नेस्ट के बाद कौन सा लेटर आता है? ओ फॉर आउल. O for owl. Now put your pencil on the dot and draw a curve, a circle and a loop. What is this? O. O for owl. Next O आपको यहाँ से join करना है. कहाँ से? From here. A curve and a loop. O for owl. What is the spelling of owl? O W L. Owl. O for owl के बाद कौन सा लेटर आता है? P. P for peacock. P for peacock. So draw a slanting line, standing line and a curve. What is this? Letter P. Again slanting line, standing line and a curve. What is this? Letter P. P for peacock. What is the spelling of peacock? P E A C O C K. Peacock. Now P for peacock के बाद कौन सा लेटर आता है? Q for queen. Q for queen. So make a Q for queen and from here you have to draw next Q for queen. Okay. Next Q for queen आपको कहाँ से join करना है? यहाँ से. कहाँ से? यहाँ से. So Q for queen. What is the spelling of Q for queen? Q U E E N. Queen. Now Q for queen के बाद कौन सा लेटर आता है? R for rabbit. R for rabbit. So draw R for rabbit and again R for rabbit आपको कहाँ से join करना है? From here and draw a curve. What is this? R for rabbit. What is the spelling of rabbit? R A B B I T. Rabbit. Now R for rabbit के बाद कौन सा लेटर आता है? S. S for seller. S for seller. So put your pencil on the dot and draw a curve. And from here you have to join next S. S for seller. S for seller. What is the spelling of seller? S A I L O R. Seller. S for seller के बाद कौन सा लेटर आता है? T for tap. T for tap. Now again put your pencil on the dot and draw a slanting line and again a slanting line and a slipping line. What is this? T. T for tap. Next T for tap आपको कहाँ से join करना है? यहाँ से. From here you have to join next T. So draw a slanting line and stop here. T for tap. What is the spelling of tap? T A P. Tap. T A P. Tap. Now T for tap के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? T for tap के बाद U for umbrella. U for umbrella. So this is U for umbrella and next U for umbrella आपको कहाँ से join करना है? यहाँ से. Join next U for umbrella from here. This is U for umbrella. U for umbrella. What is the spelling of umbrella? U M B R E L L A. Umbrella. Now U for umbrella के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? U for umbrella के बाद V for van. This is V for van. V for van. So V for van के बाद एक और V for van कहाँ से join करोगे बच्चों? From here. This is again V for van. What is the spelling of van? V A N. Van. Now V for van
एन के बाद कौन सा लेटर आता है? W for watch. W for watch. What is the spelling of watch? W-A-T-C-H. Watch. Now put your pencil on the dot and draw a curve, and again a curve, and again a curve. This is W. Okay. नेक्स्ट एक और W आपको राइट करना है. सो नेक्स्ट W आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे? यहाँ से. दिस इज नेक्स्ट W. अ कर्व, अगेन कर्व एंड W. W for watch. W for watch. Speak with me. What is the spelling of watch? W-A-T-C-H. Watch. W-A-T-C-H. Watch. W for watch के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? X for Xmas. X for Xmas. Draw X for Xmas. Put on the dot and draw a curve and a small semicircle. One more semicircle opposite to the first, and this is X for Xmas. Now आपको क्या करना है? One more Xmas बनाना है. So put your pencil here and draw a curve and again a curve opposite to the first. This is X for Xmas. तो टू लेटर्स को आपने कैसे ज्वाइन किया है बच्चों? टू लेटर्स को आपने ज्वाइन करना सीखा है. X for Xmas. What is the spelling of Xmas? X-M-A-S. Xmas. Now X लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है? Y. Y for yacht. Y for yacht. Now put your pencil on the dot and draw a curve and a small semicircle, a standing line, a curve. This is Y. Y for yacht. What is the spelling of yacht? Y-A-T-C-H. Yacht. So what next Y आप कहाँ से ज्वाइन करोगे बच्चों? From here. कहाँ से? यहाँ से. Now put your pencil here and draw a curve, a standing line, and again a curve. This is Y. Y for yacht. Y for yacht. Y for yacht के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? Z for zebra. Z for zebra. Now put your pencil on the dot and draw a curve and again a curve, a small semicircle, and this is Z. Z for zebra. Z for zebra. Now next Z for zebra आपको कहाँ से ज्वाइन करना है बच्चों? From here. This is next Z. Z for zebra. What is the spelling of zebra? Z-E-B-R-A. Zebra. So बच्चों आज आपने क्या सीखा? Today you have practiced the writing letters together. लेटर्स को साथ में कैसे लिखा जाता है आपने ये प्रैक्टिस किया है. So in your homework you have to write that letter together in the cursive writing book. Okay, and click a picture of it and send it to the school WhatsApp number. आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों? आपको लेटर टुगेदर पेज नंबर 7 पर आपको राइट करना है यूजिंग पेंसिल. आपको पेंसिल से लिखना है एंड देन आपको पिक क्लिक करके स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है. ओके, एंड इन द नीट एंड क्लीन राइटिंग. आपको कैसे लिखना है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग. Till then, take care and keep studying.